So good morning friends, सभी को प्रणाम नमस्कार। आप सभी का पत्रकार बंधुवर का स्वागत है। आप आए तो बाहर आई। साल शुरू हो रहा है, होने वाला है, हमारा साल शैक्षणिक साल जो है शुरू होने जा रहा है, तो उसका शुभारंभ सदा पत्रकार बंधुवर से हो तो वो ज़्यादा आनंदमयी रहता है। आज हम आपसे यूजी, पीजी, पीएचडी और एसओएल और सभी एडमिशन्स के संदर्भ में आपसे संबोधित हो रहे हैं। University had announced the eligibility criteria through its Bulletin of Information on February 13th, 23. And today we are going to discuss the common seat allocation system, that is CSAS 2023. Before we start on with that, I request sir to please launch those 3 bulletins for various courses. Now I also welcome Professor Yogesh Singh, the Vice Chancellor of University Delhi, Dr. Vikas Gupta, the Registrar or Director of the SOL, and Ms. Haneet Gandhi, the Dean of Admissions. Now I request Professor Yogesh Singh to please give his opening remarks. Good morning. Good morning to all of you. Today is a very, very important and auspicious day for University of Delhi. We are starting our admission process today. As you all know, for the undergraduate admission, common university entrance tests are going on, and CUET started from 21st May 2023 and it is still underway. So it will take some more time, and the admissions will be based on the result of the CUET in University of Delhi. University of Delhi offers 78 undergraduate programs and 198 BA programs, combinations offered in 68 colleges of the university. There are about 71,000 seats offered in the undergraduate programs, and we have different combinations in program combination with colleges. If we combine them, the number is 1,553 different options to the students. Regarding the admission to fine arts in College of Arts will also be done in this year through CUET and through our common seat allocation system. Regarding the sought after course, when we were going through the data, this most sought after program in CUET undergraduate were BCom honors, where 1,30,000 students showed their interest in BCom honors,
And then second is BCom pass course, 1,26,239. It means BCom is a flagship program of University of Delhi, and many students want to join this program. So our portal will be available from today, this Common University Seat Allocation Systems, and students will be asked to fill their details and the registration process. Few new things will happen this year. Like in the first round of admission, we will allot 20% extra seats in UR category, OBC, EWS categories, and 30% extra allotment will be done in SC, ST, and PWD categories for all programs in all colleges. This we did last year also. Additional 30% for SC, ST, and 20% for other categories. But based on the last year experience, this has slightly amended. Amendment is now in colleges where the withdrawal was less than 5% of the intake in the previous year. Because there are colleges where there were hardly any withdrawals, and if we admit 30% or 20% extra students in the first round only, then you know what happens? They have extra 20% or 30% students. In order to avoid that situation, what we are saying, where the withdrawal was less than 5% of the intake in the previous year, in those colleges and in those programs, 10% extra allotment will be done for UR, OBC, EWS, and 15% in SC, ST, PWD categories instead of 30 and 20 in those colleges. But there are very few colleges, such colleges. But yes, there are colleges. Regarding admission to ECA and sports and supernumerary quota in undergraduate studies, there are 26 games under in sports supernumerary quota and 14 categories including NSS and NCC under the extracurricular activities supernumerary quota. 5% of the total sanction strength of the college shall be allocated for ECA and sports supernumerary quota in the colleges. The college can allocate 1% to 4% to ECA and sports subject to a maximum of 5% intake in the colleges. So it means what? The distribution between ECA and sports can vary depending upon the college, 1 to 4%, but maximum will be 5%. In addition, not more than, this is also a new thing, in addition, not more than 20% seats of the earmarked seats of quota shall be allocated in a single program. For example, there are 1,000 seats in the college, and 1,000 seats and 5% is 50. So you cannot allot all 50 seats in a particular program. Maximum 20% can be allocated, because what happened last time and in the previous year, in some of the colleges, in few programs, there were like 30, 40 students, sports students or ECA students in a program. In order to avoid that, and in order to have fair distribution in different courses, we say the maximum permissible limit will be only 20%. For admission to ECA and sports supernumerary quota, combined ECA merit list and combined sports merit list will be the basis for seat allocation. Regarding PG admissions, this PG, as you all know, CUET PG has started from June 5th, 2023 and is still undergoing on. It is still going on, and University of Delhi offers 77 postgraduate programs in 58 university teaching departments and centers. We have about 13,500 seats including NC-Web. MA Political Science is the most sought after course in CUET PG. 37,552 students opted for MA Political Science. And admission to all postgraduate programs is based on Common University Entrance Test. Regarding PhD also this time, otherwise we used to conduct our PhD through, although through NTA only, we were having separate entrance test. But now from this year onwards, we have joined the CUET, and
University of Delhi offers 51 PhD in 51 programs, and admissions will be through CUET PhD. And there are two streams here. One, students will come from UGC NET, JRF, and CSIR NET, and other is the CUET. After that, they have to appear for the interview for the same. And university is likely to open its registration portal for PhD in the last week of June. One thing which we all know, I'm very happy to announce that from this academic year, we are starting 3 BTech programs in our university: BTech Computer Science and Engineering, Electronics and Communication Engineering, and Electrical Engineering. Admissions will be through JEE Mains 2023 rank, and university will open its portal in the last week of June, and then there will be registration and counseling like that. In the BTech program, one additional thing which we have done is 1 seat in each BTech program will be offered as a supernumerary seat to single girl child. This is a practice which is followed in other institutions like NSUT and DTU. So we are making special provision here for single girl child, 1 seat in each BTech program. University has also decided, because being the technology program, university will, instead of providing laptop to every student, what we are saying, because sometimes in our university system, it may be very difficult and to purchase, one aspect is purchase, but more than that is, many students have different expectations of laptop, their specifications. What we say, we will specify the standard specification for a laptop, and university will reimburse the cost of laptop or rupees 50,000, whichever is lower for all BTech students. Regarding the fee structure is comparatively high in BTech programs, but the students where the parental income is less than 4 lakh rupees, we will charge only 5% of the total fee. Although we wanted to make it total free, but 5% means what? At least they should pay something for, for getting the registration and the process. Otherwise, good number of students will block our seats unnecessary. So 5%, but we are giving laptop, so it means things will be in the minus. And the where parental income is 4 to 8 lakh rupees, we will charge 50% of the fee. So 50% fee waiver will be provided to such students, and a laptop also. Regarding the 2 new courses also, we are starting ITEP, Integrated Teachers Education Program, in 2 or 3 colleges of University of Delhi. But dates and other things will be announced later, because NTA will conduct a separate entrance test for ITEP. And for BLLB and BBA, BCom, LLB program 5-year, we have submitted, we are in the process of submitting a proposal to Bar Council of India. And after getting the approval, we will start this course. We will try to start this course from this academic session, but dates will be announced later. When it comes to School of Open Learning and NCWeb, admission of in NCWeb and School of Open Learning will be based on merit obtained in +2 for undergraduate programs. NCWeb offers 2 undergraduate programs, BA and BCom, in 26 constituent colleges. There are approximately 15,000 seats in undergraduate programs in the NCWeb, and School of Open Learning will offer 8 bachelor programs and 112 BA program combination, 112. Some dates: launch of first phase of undergraduates, common seat allocation system, June 14th, today we are starting this. Launch of second phase of undergraduates, last week of June we will start few other courses which we could not start today. First allocation cum admission list tentatively second week of July. Postgraduate registration
last week of June, PhD registration last week of June, BTech registration last week of June, and our academic session will commence from 16th July 2023. Sorry, 16th August 2023. We will start the new session. With these opening remarks, now I request the Anup Rathod to start. Yeah, I request Professor Haneet Gandhi, Dean Admissions, to please give her presentation. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सभी को नमस्कार. आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न एडमिशन जो प्रक्रियाएं हैं सारे कार्यक्रमों में यूजी, पीजी, पीएचडी, एनसीवेब, एसओएल और जो अन्य प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं उनके बारे में अवगत कराएंगे. सो सर, Sir, may I request you to launch the portal and Sir, this is the पिछली बार भी हुआ था. ये स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा? महेश, महेंद्र, देखना स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा? अच्छा सर. Yeah. इसको क्लोज कर दे, पापन को क्लोज कर दे. Sir, this is an SOL and NCWeb also. This is SOL. And NCWeb. Yes, sir. Thank you, sir. So from this minute onwards, the desirous students can now log into their CSAS portal and fill the registration form. They can log into the SOL portal and take admission in the School of Open Learning. Girls students from Delhi NCR can today onwards log in, right now onwards, they can log into the NCWeb portal and register themselves for undergraduate programs of University of Delhi. थोड़ा सा brief. Undergraduate program, जैसा सर ने आपको बताया, we offer undergraduate programs, 78 undergraduate programs. We also offer within these 78 undergraduate programs, there are 198 BA combinations. These combinations have two subjects in their terminology, in their nomenclature. Approximately 71,000 seats में admission होता है दिल्ली विश्वविद्यालय में. ये admission जो है विभिन्न colleges में होता है, विभिन्न programs में, और जो programs हमारे included हैं वो है Bachelor of Arts, Bachelor of Science, BCom, BTech, BFA, BLEd और अन्य कई और programs. हमारी registration fees जो है, जो last year CSAS की थी वही है, 250 rupees non-refundable for UR, OBC and EWS and 100 rupees for SC, ST and PWD. Candidates who wish to take admission under the ECA and sports supernumerary quota will have to pay an additional fees of rupees 100. The admission process is same as last year, but yet to brief a little glimpse of what we had done last year.
Our CSAS form which is being launched today will comprise of basic details, जिसमें बच्चों को basic details डालनी होगी, जैसे कि उनकी personal details, जिसमें वो अपना पर्सनल पेरेंट्स का नाम, कैटेगरी, जेंडर, ये सब फिल करेंगे. कुछ फील्ड्स हम ऑटो इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम CUET, जो कि नेम, photograph and signature. So these 3 fields will be non-editable. The candidates can change the rest of the fields. Then they will move on to an academic section where they will be asked to put their academic marks, class 12th के marks. डिजीलॉकर से जो बच्चे CBSE के हैं उनका अपलोड डिजीलॉकर से ही उनकी मार्कशीट आ जाएगी. इसके बाद जो बच्चे ECA और स्पोर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो उस सेक्शन पे लॉगिन करेंगे और वहाँ पर जो भी ECA और स्पोर्ट्स की कैटेगरी को वो चूज़ करना चाहते हैं उसे चूज़ करेंगे. इसके बाद आएगा अपलोड का सेक्शन, जिसमें जितने भी अपलोड्स होते हैं, जो रिक्वायर्ड अपलोड्स होते हैं, नेम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, ECA कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स एंड बाकी उनके जो भी दस्तावेज़ है वो उसे यहाँ अपलोड करेंगे इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. Then they can preview. We recommend the students to please preview the form before submitting, because एक बार जब submission हो जाएगा तो कोई भी edit possible नहीं हो पाएगा, and we will not be able to edit any of the seed streams which have been submitted by the candidates. We also request the candidates to be very careful while filling the details, because name, father's name, parents' name, बैंक डिटेल्स ये बाद में चेंज नहीं हो पाएंगी, और जो आप फॉर्म सबमिट कर देंगे उसी के बेसिस पे ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म तक जाता है. तो ये डिटेल्स जो है बहुत ध्यान से फिल करें, और इसमें बहुत ज़्यादा ना जल्दी करें और ना ही एंड लास्ट मिनट तक का देर करें. Then they will move on to the payment gateway, and depending on the sections and subsections that they have chosen, they will have to pay the requisite fees. Certain advices, as I just said, that class 12th marks should be entered very carefully. जहाँ पर theory के लिखने हैं, जहाँ पे practical के लिखने हैं, वहाँ पर carefully लिखें, because ये फिर आगे tie breaking का आधार बनते हैं. जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप तैयार कर लीजिए. जैसे कि OBC का सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए. ये दस्तावेज़ पूरे तैयार कर लें और देख लें कि वो सब ठीक उसमें है, इशूड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, बिकॉज any admissions, all admissions will be done only on the basis of the documents that are uploaded. We will not be able to do admissions on the basis of undertakings or any acknowledgement receipt. And don't wait for the deadline. Please do the payment and everything in time. After the CUET results are announced, जैसे ही CUET के results declare हो जाएंगे, फिर हम अपना second phase खोलेंगे. ये phase बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि इस phase में बच्चे अपनी preferences भरेंगे. As you could just do a little maths, और सर ने बताया, in Delhi University, a student can, if he or she is eligible to a program, to the programs of all the programs, we have an option of 1,550 program plus college combinations from which the student can choose and make their preferences. So the second phase will be launched just after the results of CUET are announced. In this phase, the candidates will have to again log into their dashboard, and they will have to select the program and colleges. We will use the जैसे हमने last year use किया था, हम इस साल भी normalized course जो Delhi CUET provide करेंगे उन्हीं के आधार पर admission करेंगे according to the program specific eligibilities. Then students will be asked to do subject mapping. मैं आपको याद दिला दूं कि, और हमने अपने बुलेटिन में भी ये बात लिखी हुई है कि वही सब्जेक्ट्स बच्चे CUET में ले जो उन्होंने क्लास 12th में लिए थे, इन सब्जेक्ट्स की बच्चे मैपिंग करेंगे. मैपिंग के आधार पर फिर उनको उनकी एलिजिबिलिटीज़ पता चल जाएंगी. जितने भी प्रोग्राम्स के लिए वो एलिजिबल होंगे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर उनका स्कोर आ जाएगा. 4 सब्जेक्ट है या जहाँ 3 सब्जेक्ट है या जहाँ भाषा अनिवार्य है, उन सब के सब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली CUET के मार्क्स ऐड करके एलिजिबिलिटीज़ आ जाएंगी. ये हमारा पोर्टल कर देगा. They just have to then select, or probably you have to order the college and program preferences. Now this step is a very important step, because the process in which you enter the program and college combination, that will become the priority list also. तो जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाएंगे वैसे ही आपकी प्रायोरिटीज़ 1, 2, 3, 4 होती जाएंगी. इसमें हम आग्रह करते हैं कि बच्चे ना तो जल्दबाजी करें और ना ही पूरे लास्ट मिनट का वेट करें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप. जो प्रेफरेंसेस आप इस फेज़ में भर देंगे वो आपके सभी एलोकेशंस का आधार बनेंगी. अपग्रेड का भी वही आधार बनेंगे, स्पोर्ट्स और ECA के एडमिशन का भी वही प्रेफरेंसेस आधार बनेंगे. आप बाद में ऐड और डिलीट नहीं कर पाएंगे.
यहाँ बस हम एक आपको ऑप्शन देते हैं कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा और यदि आप अपग्रेड के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपके जहाँ आपको सीट मिली है उसके ऊपर की प्रेफरेंसेस को आप रीऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि हम ऐड और डिलीट का ऑप्शन नहीं दे पाते हैं. सो वी रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स टू बी वेरी केयरफुल. दे शुड रादर सिलेक्ट ऑल द प्रोग्राम एंड कॉलेज कॉम्बिनेशंस इन विच दे आर एलिजिबल. They should give maximum number of preferences and please arrange the preferences very, very carefully. Only the programs and colleges that have been selected at this stage will become the basis for entire admission process. Do not wait for the last minute. In fact, we would like to request you at this platform, क्योंकि अगर आपका CUET का एग्ज़ाम हो गया है तो आपके पास अभी टाइम है, आप लिस्ट बना के हमने आपको सारे प्रोग्राम सीट मैट्रिक्स सब बुलेटिन में डाला हुआ है, जहाँ जहाँ आप एलिजिबल हैं उसके बेसिस पे आप अपनी शॉर्ट लिस्टिंग अभी ही शुरू कर दीजिए. जब तक हम तैयारी कर रहे हैं अपना लॉन्च करने की, आप अपनी प्रेफरेंसेस की शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दीजिए. एंड डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मिनट ऑफ प्रेफरेंस फिलिंग बिकॉज देन इट बिकम्स टू कम्बरसम और गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं. वंस द प्रेफरेंस फेज इज़ ओवर, then last year we had done this and it was a successful exercise. We will be repeating this exercise. Based on the data of the preferences that we will get, we will then announce a simulated ranked list. This will be available on the dashboard of all the candidates who would have filled their preferences. यहाँ से वो उस समय जो हमारे पास preference order होगा उससे अपना एक आधार बना सकते हैं, अपने chances probability देख सकते हैं कि उनका admission कहाँ होने के probability या chances हैं. Again, after the declaration of the simulated rank, we will again open the portal for 2 to 3 days to again order, add or delete your preferences. So this will, again we will give the opportunity to the students to revise their preferences if they wish to do so. Henceforth, we will close the portal and we will start working on our allocation policies. The allocation will be based on the highest possible preference given by the students, based on the program specific eligibility, their category and the availability of seats in the programs. Once the first round of allocation is done, then जब बच्चों को allocation हो जाएगा फिर उन्हें क्या करना होगा, जो उन्हें सीट allocate हुई है उसके आधार पर उनके पास चॉइस वैसे एक ही है कि उसको आप एक्सेप्ट करिए. अगर आप उसमें इनएक्टिव रहेंगे या कोई भी स्टेप नहीं करेंगे तो आपकी सीट चली जाएगी और आप आगे के सीसास में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. सो इफ़ यू हैव बीन एलोकेटेड अ सीट, यू मस्ट एक्सेप्ट द सीट. वंस यू एक्सेप्ट द सीट, your acceptance will go to the concerned college. The college will approve your acceptance and you will be asked to pay the requisite fees. Here, important part is that do not wait that I will do it in the next round. Once you've been allotted, that is the best that you could be allotted at that time. तो उसको accept करिए और उसके बाद अब next round में अगर आप higher preferences पे जाना चाहते हैं तो upgrade के माध्यम से आ सकते हैं. आप अगर कोई activity नहीं करेंगे तो आप सीसा से बाहर हो जाएंगे. अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और अब आप अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं तो आप अपग्रेड का क्लिक करेंगे, तब आपके पास दो चॉइसेस आएंगे, या आप अपग्रेड कर सकते हैं या फ्रीज दबा सकते हैं. अगर आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं तो आप अपग्रेड करिए. अपग्रेड का मतलब हुआ फिर आप रीऑर्डर कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंसेस. वी विल कंसिडर यू फॉर एन अपग्रेडेशन एंड वी विल गिव यू द नेक्स्ट प्रेफरेंस विच इज़ देयर इन योर प्रेफरेंस ऑर्डर, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू द allocation policies. In case you are happy with what you have got and you don't want to go ahead, you don't want to go for upgrades and you want to retain to the college and the program in which you have been admitted, please press a freeze button. However, after pressing the freeze button, no action will be taken and that will be taken as your final allocation at the admitted seat. We have also made a provision last year and we will continue with the practice of a mid-entry provision for the candidates who for any chance miss to register themselves during the registration phase. तो किसी भी बच्चे का अगर registration miss हो जाए अभी, उनके लिए हम एक दोबारा पोर्टल खोलेंगे जिसमें वो मिड एंट्री को हम कहेंगे, उसमें आपको 1000 रुपये फ़ीस देना होगा नॉन रिफंडेबल और आप मिड एंट्री के माध्यम से भी सीसास में आ सकते हैं. लेकिन यहाँ पर आपकी काफ़ी सारी प्रिविलेजेस चली जाती हैं क्योंकि आपके पास जहाँ सीट अवेलेबल होगी वहीं मिलेगी. And this will be only on the the criteria if you meet at that point of allocation. So we request candidates not to wait for this kind of a provision. Rather, you should register yourself on time. This is only for those unfortunate ones who may miss the registration and want to then enter into the system. As sir said,
For the admissions in the first round and to optimally fill our seats, we will be doing 20% extra allotments in the UR, OBC and EWS category in the first round and 30% for SC, ST and PWD. However, colleges in which the withdrawals were less than 5% of the intake, 10% extra allocations will be done to UR, OBC and EWS and 15% will be done to SC, ST and PWD. Coming on to the admissions for the ECA and sports supernumerary quota, as announced, there are 26 games and sports and 14 ECA categories including NCC and NSS. 5% of the total sanction strength was allocated to the ECA and sports quota together. The college can allocate between 1% to 4%, subject to the maximum of 5% intake of the college. However, in addition to all this, not more than 20% seats of the earmarked seats of a quota can be given to any single program at a time. For admissions to ECA and sports, we will go by our last year's policy, which is calculating the combined ECA merit for ECA and combined sports merit for sports admissions. All the admissions to ECA and sports category will be based on the initial preferences that candidates would have submitted at the time of registration. The other supernumerary seats, quotas which we offer, which the Delhi University offers, is PWBD, Children and Widow of Personnel of Armed Forces, the CW category, Kashmiri Migrant. In तीनों में 5% seats to all programs. Then we also offer supernumerary quota to PMSSS. This is based on the allocation policies of AICTE and Delhi University. We also offer supernumerary seats to the Sikkimese students, which are nominated by the Sikkimese government. And this year we will also be offering 2 seats, 1 male and 1 female in each program, each college, to the candidate who is an orphan. This year we have added 1 course in the CUET and CSAS, which is the Bachelor of Fine Arts. Admission to this program will be done through the basis of CSAS. There will be 6 specializations from which the candidate can choose. The candidate will, in addition to this eligibility, he or she will also have to go through the practical exam, which will be done in the College of Art based on the specialization that the candidate chooses. There will be an additional fees of rupees 400 non-refundable for applying to BFA. Now, with the permission, I would now move on to the admission policies related to postgraduate programs. Postgraduate programs in University of Delhi, there are 77 PG programs run in 58 departments, and NCWeb admissions will also be done through CUET in the postgraduate. These will now include the total PG seats, including NCWeb, will now be approximately 13,500. We offer postgraduate programs in arts, sciences, commerce, law, education, and certain other departments. The admissions will be done on the score of the CUET PG. The registration portal for CUET PG will open after the declaration of the results of PG CUET, and the eligibility criteria to all the PG programs which earmarked the number of seats, eligibility criteria और कौन सा CUET का पेपर लेना, ये सब हमने 22 मार्च को ही यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे PG पोर्टल पे डाल दिया, एडमिशन पोर्टल पे डाल दिया था. और अब जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तब हम अपना कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स लॉन्च करेंगे, टेंटेटिवली इन दी लास्ट वीक ऑफ जून. Here again the admission fees will be same, 250 rupees for UR, OBC and EWS, and for SC, ST and PWD it will be 100. An additional fee of rupees 100 will be charged for the candidates who would like to take admission under the sports supernumerary quota. The allocation policy for PG will be very similar to that of UG. Here again the candidates will be given the option for upgrade, freeze, mid-entry and their preferences. The list will be in 2 parts. There will be a common merit list which will comprise of all the students who would have applied to that program, and there will be another list which will be a category 2 merit list in which the students of University of Delhi who meet the eligibility criteria, the program specific eligibility criteria, will be considered. The highest possible preference will be allocated based on the merit, social category and availability of seats, and the registration, as I said, will start in the last week of June. Coming to the PhD admissions, we offer PhD admissions in 51 programs, again coming from various faculties and departments.
which encompasses law, science, commerce, education, humanities and law, and etc. The registration process will start from the last week of June. Here we will, there are two procedures, there are two platforms through which the admissions can take place. One is through the candidates who would have qualified UGC NET, UGC CSIR NET or any other similar national based test which has been earmarked in the Ordinance 6 and its amendments of University of Delhi. The second procedure, the second path to enter into PhD will be through CUET. However, interview would be compulsory and mandatory requirement for all the candidates. The registration portal, considering that CUET will happen very soon, but we want to start at PhD admissions in the month of July, we will, for the benefit of both the categories of students, we will open the platform for more than one time to accommodate the students who will also come through CUET PhD. The registration portal will be open and they'll be able to register themselves after they qualify CUET PhD. They will then come for the interview. However, for them, perhaps the interview could be taken only once in the academic year. And the DRCs and the BRCs of the department will hold interviews for more than one time to accommodate all kind of students. The registration fees for PhD will be like last year, 750 rupees for UR, OBC and EWS and rupees 300 for SC, ST and PWD. Our admission to Bachelor of Technology, we are offering 3 programs for this year. This Computer Science and Engineering, Electronics and Communication Engineering and Electrical Engineering. The admissions to these 3 flagship programs will commence from July onwards. The eligibility to these 3 BTech programs is passing class 12th from a recognized post and securing 60% or more marks in physics, chemistry and mathematics and having passed English as a core or an elective subject. The admissions will be done through JEE Mains Rank 2023. There will be a one-time registration cum counseling fees of rupees 1500 and the allocation policies will be similar to other engineering programs. They'll be able to give their preferences for the 3 programs. They can upgrade, freeze and then take admission in the sought after program. Now, coming to the admissions to our 2 associate departments, School of Open Learning and Non-Collegiate Women's Education Board. In the undergraduate program, the admission to these 2 undergraduate programs in these 2 institutes is through the merit obtained in class 12. In School of Open Learning, there are 8 bachelor's program and 112 BA program combinations. SOL has decided that they will admit the students initially, but if the student, अगर किसी student का बाद में admission हो जाता है CUET के माध्यम से किसी और university में या दिल्ली university में, they will refund the entire fees of admission by deducting a small amount of rupees 500 as the administrative process. Details will follow in a couple of minutes. In NC Web, there are the NC Web is offered to the girl candidates belonging to Delhi region. They offer BA and BCom in 26 constituent college. Each college center has 230 seats for BCom and 355 seats for BA program, which means there are approximately 15,000 seats which are offered to the girl candidates of Delhi NCT. And for details, the candidates can refer to ncweb.du.ac.in. I now request Professor Payal Maggu to apprise you of admissions related to SOL. Namaste. With permission of, next slide, Pyapaji. With permission of Honorable Vice Chancellor, I would take this privilege to announce that Campus of Open Learning, Department of Distance and Continuing Education is announcing its admissions today from 14th of June in all 8 undergraduate courses, 2 postgraduate courses also. The highlights of admission for 23-24 is CUET is not required for any UG or PG admissions. There will be no CUET. It will purely be on the basis of the marks obtained in 12th class. And commencement of online admission process will start today, 14th June 23. And the last date of admission, as notified by Distance Education Bureau, DEB, is
31st August 2023. UG portal link is also here and PG portal link is also here, and it is important from the last year's experience that after the regular college admission there were several students who were left out and they wanted admission in campus of open learning, Department of Distance Education, but unfortunately our date was, it was only till September last year, and this year the initial date is only till August 31st. It may increase, but it may be on the basis of the communication which we receive from Distance Education Bureau. So for those students, there is an advisory that the students who take admission in campus of open learning, Department of Distance Education, the complete fee will be refunded till the last date of admission of University of Delhi. If they take admission and there is last date of admission in the regular mode of University of Delhi, they wish to refund their fees, only 500 will be deducted as processing charges and rest of the fees will be refunded to them. So it's advisable that they must secure their seat here also. These are the 8 undergraduate programs: a Bachelor of Business Administration, Financial Investment Analysis, that is BBA FIA, and Bachelor of Management Studies, BMS, Bachelor of Arts Honors Economics, BA Honors English, BA Honors Political Science, and BA Honors Psychology. Right now we are not offering BA Honors Psychology, but within a week we will get communication from Distance Education Bureau, and most probably from this year onwards we will be offering BA Honors Psychology also. Bachelor of Commerce, BCom Honors and BCom Pass also we are offering, and BA program with 112 combinations we are offering. The important thing about the BA program now is that we are offering 2 more combinations which are quite sought after combinations in regular mode also, that is computer program, computer applications in BA program as major or minor subject, whatever the student want, and BA program with psychology, again with major or minor, whatever the student wants in the BA program. But the seats in these 2 programs is limited, that is up to 2,000. So the admission in these 2 programs will be based on the merit. Next one. Now the eligibility of the UG programs is, in the honors program, it is 45% aggregate for general students, and subsequently for other students, the eligibility as per rules is lower down. And it is 45% aggregate again in all the honors courses, and in programs, it is pass in the 12th class. If just pass is there, then the students can apply in the BA program courses. But the new combinations, that is the BA program with computer science, there is eligibility that the student must have passed class 12th with 50% marks. The eligibility here changes, and with 50% marks in mathematics or computer science. And similarly in psychology also, that is pass in 12th class, or the candidate should have passed, and the equivalent combination for a single recognized board. Here also the seats in both these programs, that is the BA program computer applications and BA program psychology, it is limited to 2,000. So first the student will register and then will take out the merit list. Next one. PG admissions, we will start again from 1st of July 2023, but right now there are 2 PG courses, BLIB, BLISC, Bachelor in Library and Information Sciences, and Masters in Library and Information Sciences. The portal is ready for these 2 courses, and students can take admission from today onwards in BLISC and MLISC. These are the postgraduate programs which we will be offering, and their admission will start from 1st of July. Bachelor of Library and Information Science today itself, Master of Library and Information Science from 14th June itself, then from 1st of July, MA Hindi, MA Political Science, MA Sanskrit, MCom, MA History and MBA.
And all these programs, for all these programs, no CUET is required. And eligibility for postgraduate programs is, again, graduation from a recognized university for Bachelor of Library and Information Science, and for Master of Library and Information Science, BLISC, with 50% of marks from any recognized university. Thank you. So just thank you, ma'am. Just a little glimpse of our non-collegiate women's education board. This is the number of programs and number of seats that are offered here. The merit will be based only on class 12th results, and multiple list will come out maybe simultaneously with our CUET allocation lists. The centers of NCWeb are in almost all the colleges of University of Delhi, which pan Delhi coverage. Just to conclude, the admission support system is now ready to help the students. Our information is available in various formats, a text in the form of bulletin, visuals in the form of infographics, and videos and webinars are in place. Our admission website and the help desk email IDs are also there, and you will, if you write to us, a response will be given to you as soon as possible. The FAQs, which help the students to look out for the relevant queries, are based on our experience of last year, have been prepared, and they're already on the website of the university. Help desk facilities have been established, and the admission branch will now very soon from June 19, which is Monday onwards, we will start our webinars, which will be done in bilingual mode, and they'll be available on the YouTube channel of University of Delhi for any time viewing. The online grievance mechanism is also underway, and it will be soon be integrated or will be displayed on the website of the university for quick resolution of grievances. हम आपके माध्यम से सिर्फ बच्चों को ये थोड़ी सी एडवाइजेस देना चाहते हैं कि बच्चे सभी कभी भी लॉगिन करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या एनटीए की जो ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है उस पर ही ज़रूर सारी इन्फॉर्मेशन के लिए लॉगिन करें. ये इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ दी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या हमारे एडमिशन वेबसाइट, हमारा फेसबुक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या ट्विटर के अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और इसी इन्फॉर्मेशन पे वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आएँ. और जो भी कम्युनिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी करती है उसका जो डोमेन नेम होगा वो du.ac.in से होगा. सो दीज आर जस्ट सम कॉशनरी मेजर्स विच स्टूडेंट्स यूज टू टेक while taking the admission to University of Delhi. As a concluding mark, we want to request that admission to Delhi University will be done only through the single platform of CSAS. All the colleges, all the programs will be admitting students only through this single program, and this is a binding to all the colleges. No other admissions taken from no other platform will be considered valid under the premises of University of Delhi. We thank you, and we open the house for discussion. Thanks, Professor Hanit Gandhi and Professor Payal Magu. And now, before we go ahead for the interaction and your questions, I have a information कि सभी ये हम प्रेस रिलीज़ जो है DU मीडिया अपना जो ऑफिशियल ग्रुप है उसके ऊपर by 4:30 you will get that. और उसके साथ साथ ये टेम्पलेट्स जो हैं प्रेजेंटेशन की ये भी आपको उसी के साथ 4:30 पे मिल जाएंगी टेम्पलेट्स. और साथ में जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये सब की PDF कॉपीज़ जो हैं ये भी आपको by 4:30 अलॉन्ग विद द रिलीज़ मिल जाएगी. तो दोस्तों अब आपका स्वागत है. तो आप कोई प्रश्न, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप आमंत्रित हैं. जी, टेक द माइक. प्रोफेसर योगेश सिंह जी, आपको बहुत बधाई. आज फिर एक इतिहास बनाया आपने. रेगुलर कॉलेज, NCWeb और DU सोल तीनों की जो है पोर्टल एक साथ लॉन्च हुआ. पिछले साल सर जो है वो ग्रीवेंस सिस्टम को लेकर बहुत सारी क्वेरीज थी. इस बार भी ग्रीवेंस पे बहुत ज़्यादा नहीं बोला गया है, केवल ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पे बात हुई है. पिछली बार भी बच्चे ऑनलाइन पर लगातार शिकायत कर रहे थे लेकिन उनको ग्रीवेंस मिल नहीं रहा था. आपने कहा था कि फिजिकल रूप में भी करेंगे. क्या इस बार भी उनकी शिकायतें अनरिजॉल्व रह जाएंगी? नहीं, अनरिजॉल्व रहने की बात नहीं है. ऑनलाइन हेल्प तो हम प्रोवाइड करेंगे ही, और उसको थोड़ा पिछली बार से और बेहतर बनाने का प्रयास किया है. जहाँ तक बात है फिज़िकल, यहाँ पर अगर कोई आता है तो हमारी हेल्प डेस्क यहाँ पर भी होगी.
जहाँ पर कि स्टूडेंट्स को मदद करेंगे, और कॉलेजेस में भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ कॉलेजेस की इसमें मदद लें। लेकिन क्या होता है आजकल, क्योंकि स्टूडेंट बहुत IT से भी हैं, तो जितना हमारा ऑनलाइन सिस्टम मजबूत होगा उतना सबके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर वहाँ ज़्यादा कमी होगी तो बच्चों को यहाँ आना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि उनको आना ना पड़े और ऑनलाइन ही हम उनको हेल्प दे पाएँ। आपने कॉलेजेस में तो भेज दिया कि अपने डिपार्टमेंट्स में और कॉलेज में एक ग्रीवेंस कमेटी बनाई जाए, उन्होंने बना भी दी है, लेकिन वो कमेटी कितना काम करेगी उसकी मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। नहीं, कोशिश करेंगे कि उसकी अच्छी मॉनिटरिंग हो और कम से कम स्टूडेंट्स को परेशानी हो। हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं उतने प्रयास करेंगे। माइक वहाँ दे दो पीछे। हाँ। Hi, I have two questions. The Yes. first is about online classes. Right now, we know that the first year students, some of them have offline classes, but some of them have online classes, especially during the time when the exams were going on. Is this something that the first years, when they do take admission in the future, the new batch that comes in, will they be also facing that? And the second question, which is also in connection with this, is that the first year students, which are currently first years going into the second year in the next session, their academic calendar was very, very delayed, because of which they are still attending their classes, even though there's a semester break for the second and third years. Is this also something that this batch will be facing, the one that is going to be coming in, or will all three academic years for all three batches be in continuation in the next session? We are trying to systemize our university calendar, but this academic session will start from 16th August, except in few courses like in FMS, they are starting their session from 1st July only. But otherwise, university will open from 16th August to all the students. Online classes, we are not, now university is open, classes are offline. I don't see any merit of online classes now. No, sir, online classes were being conducted. For instance, I can tell you that ARST had online classes, Kirodimal College had online classes, Hindu College had online classes, Miranda House had online classes. Some of these are colleges that were in the NIRF rankings. So we know that online classes were happening. This is especially true for... If they are conducting, they might be facing some difficulties, but now difficult days are over, and when academic calendar will be streamlined, they will not have any problems. I'm quite hopeful that the things which happened last year will not happen this year. Yeah, Vishu, please. Hi sir, I have two questions. First of all, can you please name the colleges which have withdrawal less than 5%? Can you name some of the colleges? One is SRCC. Just SRCC, sir? I think so. And so my second question is that Delhi University has announced the admission through CUT PhD, but NTA and UGC have not issued any notification in this regard. When contacted, the UGC chief said that they are not planning to conduct CUT PhD this year. I don't know. There is some confusion somewhere, because they are conducting CUET PhD for BHU, University of Delhi and JNU. JNU, so they conduct, NTA conduct separate examinations. No, this time there will be only one common examination. But sir, we contacted them. They said that we are not conducting CUT I will find PhD. out. I don't have any idea. Okay, sir. But last time they conducted separately for JNU, separately for us, and separately for BHU. But this time, plan is to have only one test for 3 universities. I will also find out if there is something. इधर आगे दीजिएगा। अच्छा, श्रद्धा, please give it to Shraddha. Sir, I have a question. We'll have it. We'll take it from you. Let Shraddha come up, then we'll follow. So first thing that I wanted to know was what happens to Stephens and JMC? We have announced the admissions. But they have also on the portal, they say that it's 15% interview. So has some, how is that going to happen? I don't have any idea about the process, but here we have already announced the process.
the students who will take admission through our admission process, through common university seat allocation system, they will be treated as recognized students. Otherwise, in democracy, anyone can do anything. Why should I comment on that? If they admit students, they can admit thousands of students, give degree, they can give anything, everything to students. I am no one to comment on their initiatives. And also I wanted to know, for the PG admission, the second category list for University of Delhi students, what eligibility is that going to be, ma'am? For PhD? PG, the second category list for the University of Delhi students. So, Eligibility will be same only. sir, the category 2 students are the honor students of the respective program. This is all mentioned in the Bulletin of Information. So that is the, this, earlier we used, Internal students. yes. You please answer. Is there any change or no? Like it's Same. The only change is that they also have to sit for CUET. Earlier it was on a merit based. This time they will also have to go through CUET, and their merit will also be determined on the basis of their CUET marks. okay, no preference for them being pass out from University of Delhi of what used to happen earlier. No. इधर आगे दीजिएगा उनको. My question is done. It was about St. Stephen's only. Good. Sir, इधर please आगे front row. हेलो सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद. जो पिछले साल मैंने एक क्वेश्चन किया था, जो ओल्ड स्टूडेंट थे जिनको डिग्री नहीं मिली थी, उनको आपने अलाउड कर दिया अपना पेपर देने के लिए. कुछ लोगों को बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ जो काफ़ी सालों से कुछ पेपर दे के पास नहीं हुए थे, इसलिए. और दूसरा, आपने पिछले बार भी कहा था कि आप टेक्नोलॉजी और इस पे करेंगे. इस पे भी आपकी टीम ने और आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और इतनी जल्दी किया है कि मैंने कई यूनिवर्सिटी में मतलब देखी हैं. तो सर आगे एक आधा फ्यूचर में और क्या क्या लाने जा रहे हैं, जैसे BA LLB 5 ईयर कोर्स, इसके अलावा भी? देखिए, अभी तो टेक्नोलॉजी आया, ये प्रोग्राम शुरू किया है कि 5 ईयर लॉ प्रोग्राम शुरू किया, और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का काम चल रहा है. तो ऐसा लगता है कि 1-2 साल में कुछ नई बिल्डिंग्स आ जाएंगी. कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में शुरू हो चुकी हैं. 1-2 साल में कुछ नई बिल्डिंग्स आएंगी तो फिर नए प्रोग्राम्स प्लान करेंगे. अब और लेकिन कोई अच्छे प्रपोजल आएंगे तो हम उसके लिए भी ओपन हैं. अभी तक हमने जो सोचे थे वो सब हम लगभग लॉन्च करने जा रहे हैं. इसके बाद के लिए ओपन तो ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है 1 साल हमारी थोड़ी 1-2 बिल्डिंग आ जाए, क्योंकि स्पेस क्रंच हो जाएगा अदरवाइज. फिर ऐसा लगता है. अभी हमारे पास पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो कि एक बहुत अच्छा देश का प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन है. अभी हमारी इच्छा ये है कि एक फुल मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, तो उसके लिए भारत सरकार को एक प्रपोजल पटेल चेस्ट सबमिट कर रहा है. अभी तो वो बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है. किसी तरह से यदि हम और भी डिसिप्लिन शुरू उसमें कर सकते हैं, देखते हैं. अभी वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं. हो सकता है कि हम एक फुल मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज खोलें आने वाले वक्त में. जी अभिनव. सर, मैं ये कह रहा था कि जी जी ये ईस्ट कैंपस आप कब शुरू कर रहे हैं, या उसका निर्माण कब शुरू होने वाला है? ईस्ट कैंपस देखिए अभी वो प्रोसेस में है. वहाँ पर हमारा प्लान है लॉ को शुरू करने का. एक लॉ सेंटर वहाँ जाएगा ईस्ट के अंदर. कंस्ट्रक्शन मुझे ऐसे लगता है कि 6-8 महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू होनी चाहिए हमारे वहाँ पे. अभी टेंडरिंग प्रोसेस पे काम चल रहा है. थैंक यू सर. जी, एनीबॉडी एल्स? या प्लीज माइक उधर दीजिए. थैंक यू. हेलो सर, नमस्ते. सर, नए कोर्सेज आ रहे हैं जैसे BTech LLB, तो स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी के लिए कुछ सोचा है कि हॉस्टल? देखिए, हम कितना भी बनाएंगे कम रहने ही वाला है. लेकिन हाँ, हम कितना भी बनाएंगे कम रहने ही वाला है. लेकिन फिर भी अभी हमने 2 हॉस्टल्स बनाने का किया है कंस्ट्रक्शन. अभी ये ढाका कैंपस पे शुरू होने जा रही है हॉस्टल्स की. अगले 2 साल बाद मुझे लगता है कि थोड़ी फैसिलिटी ऐड हो जाएगी. करीब 1000+ स्टूडेंट्स के लिए ये कैपेसिटी क्रिएट होगी अभी. और सर, जो ये नए कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी?
नहीं, अलग से तो देखो किसी के लिए नहीं करना चाहते, क्योंकि जो भी एडिशनल फैसिलिटी आएगी सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, किसी एक कोर्स के हिसाब से तो फैसिलिटी नहीं क्रिएट करेंगे। अच्छा, मीन्स बीटेक और एलएलबी के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें हॉस्टल मिलेगा जो? हाँ, इसी में अकोमोडेट करेंगे जितना अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक। और एडिशनल के लिए हम लोग कर रहे हैं, अभी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा कंस्ट्रक्शन वर्क। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। प्लीज माइक इधर, किशन शर्मा जी। थैंक यू सर। सर, आपने बड़े बेहतरीन प्रोग्राम शुरू किए हैं। इसमें सर ये एक जो लैंग्वेज में पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएट का कोई भी अभी कोई ऐसा आपने प्रोग्राम शुरू नहीं किया? किसमें? जो लैंग्वेजेस में, जो चाइनीज जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, जो एशियन स्टडीज़ के अंडर में जो आप करवाते हैं, चाइनीज़ है, जापानीज़ है और कोरियन वगैरह, तो इसमें कोई अभी पीजी का कोई प्रोग्राम शुरू नहीं है? नया प्रोग्राम तो अभी नहीं शुरू किया, एक शायद वो चाइनीज और कोरियन अंडर प्रोसेस है, हाँ और जापानीज चलता है, एमए जापानीज में हो रहे हैं एडमिशन, वो हमारे है। अभी जैसे एमए जापानीज चल रहा है 2, लेकिन अभी हमारे अंडर प्रोसेस है, अभी हमारे पास प्रपोजल्स उनके आए नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर शुरू करें 2 प्रोग्राम्स। थैंक यू सर। या श्रद्धा, यू आर वेलकम। I think I'm loud enough. Sir, ITEP, you were saying NTA will conduct, NCTA will conduct ITEP? NTA will conduct entrance test on behalf of NCTE. अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने वाला है, बस बहुत जल्दी, आई थिंक विद इन ए वीक वो शुरू हो जाएगा। NTA will conduct, yes. सर, वन मोर क्वेश्चन। मैं अभिनव। हाँ, अभिनव। ये आप लोगों ने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया था कॉलेजों के लिए कि आप 12 घंटे रिसोर्स के लिए कॉलेज खोलेंगे, और 31 मई तक आप लोगों ने उनसे फीडबैक मांगा था, उसका रिस्पांस कैसा है? देखिए, जब हमने 8 से 8 की बात की है, क्योंकि रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और हम ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें, इसके पीछे भावना तो इतनी सी है। अभी टीचर्स का ऐसा है कि जो टीचर्स आएंगे उनको तो 5 से 6 घंटे 7 घंटे जो भी एक प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट रखेंगे, कि सपोज आपकी क्लास 9 बजे है तो अगली लास्ट क्लास आपकी 6 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। अगर आपकी दोपहर को है तो दोपहर के बाद 6 घंटे हो जानी चाहिए। तो किसी को भी स्टे हम ज़्यादा नहीं करने जा रहे हैं, पहली बात तो ये मैं क्लैरिफाई करूँगा। और ना ही जितना प्रेस्क्राइब टीचिंग असाइनमेंट टीचर्स की होती हैं, जैसे कि 14, 16 ऐसे रहता है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर 14 आवर्स पर वीक का होता है और 16 आवर्स का उनका है असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, वो भी वही रहने वाला है। यहाँ तक कोई, लेकिन क्या होगा कि एक स्प्रेड मिल जाएगा स्टूडेंट्स को, ज़्यादा क्लासेस आराम से हो पाएंगी, सेक्शंस के साइज रीजनेबल किए जा सकेंगे। अदरवाइज 100 की क्लास चलाना, 150 की क्लास चलाना मजबूरी में तो ठीक है, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा लगता है हमको। जहाँ तक बात है लेबोरेटरीज की, जहाँ पर असल में कंसर्न आएगा वो आएगा लेबोरेटरी। एडमिनिस्ट्रेशन अपने टाइम पे ही चलेगा, 9:30 से 5 चलता है या 9 से 5 चलता है, वैसे ही टाइम पे चलेगा। अभी है कि 8 बजे क्लास शुरू होगी तो वहाँ किसी एक टीचर इंचार्ज बनाया जा सकता है जो थोड़ा सा मॉनिटरिंग करे 1-2 घंटे के लिए, ऐसे इवनिंग में किया जा सकता है। जो नॉन लेबोरेटरी कोर्सेज हैं, जो कि हमारे 60 to 70% कोर्सेज नॉन लेबोरेटरी हैं, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स के हो गए, वहाँ तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्लासरूम खुलेंगे, टीचर्स अपने क्लासेस लेंगे। लेबोरेटरी कोर्सेज जो हैं वहाँ पर क्योंकि स्टाफ अगर हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, शुरू में तो हमने ये प्लान किया है कि हम उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। जो लोग को भी सपोज 8 आवर्स के बाद बुलाया जाएगा 2 घंटे के लिए, तो उनको हम एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। पर आने वाले वक्त में हम चाहेंगे कि कुछ और एडिशनल सीट्स पोस्ट क्रिएट हों ताकि नॉन टीचिंग की भर्ती की जा सके उसमें। ठीक है सर, एक छोटा सवाल बस और है कि रैंकिंग में इस बार डीयू जो है पिछले साल से बेहतर किया है, लेकिन अभी भी जो रिसर्च है, आई थिंक डीयू का अपना जर्नल है कि नहीं है, क्योंकि बहुत समय पहले 2 जर्नल आपकी वेबसाइट पे दिखते हैं, उसके बाद से वो कुछ हुए नहीं। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि आप टॉप 10 में तो कम से कम जगह बना लें? देखिए, टॉप 10 में तो हम बहुत जल्दी आ जाएंगे, शायद अगले साल नहीं आएंगे तो अगले साल आ जाएंगे, नहीं तो उससे अगले साल आ जाएंगे। पॉइंट क्या है कि नाउ वी आर वेरी सीरियसली वर्किंग, उस डेटा पे काम कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम कमज़ोर हैं, क्या क्या हमको उसमें करना चाहिए, वो आजकल हम सब स्टेप ले रहे हैं। और रिसर्च को बढ़ाने के लिए जो इंसेंटिव स्कीम्स लगानी हैं,
रिसर्च प्रमोशन के लिए जो करना है वो हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। अपने कुछ जर्नल्स यदि कोई फैकल्टी के पुराने चलते थे तो हम रिवाइव करने को भी तैयार हैं, लेकिन वर्ल्ड के अच्छे जर्नल्स में हमारे पेपर छपेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने घर घर में छापेंगे ना तो उसकी उतना रिकॉग्निशन होती नहीं है, लेकिन फिर भी जो जर्नल्स बंद हुए थे अगर प्रपोजल हमारे पास आएंगे तो हम उसके लिए भी ओपन है कि करेंगे। एक ना मेरा सवाल है, लेकिन वो एक्चुअली मुद्दा पॉलिटिकल हो गया है, लेकिन मेरा मकसद नॉन पॉलिटिकल ही है। वो है गवर्निंग बॉडी के इशू को लेकर के। हाँ, कि 28 कॉलेजों की जो गवर्निंग बॉडी का इशू है वो अभी सॉल्व होने की कगार पे है या नहीं है, या वो गवर्निंग बॉडी नहीं होने की वजह से कोई इफेक्ट हो रहा है कॉलेज? देखो मैं तो बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अभी हमने रिक्वेस्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को कि आप अपना हमारे को लिस्ट भेज दीजिए, क्योंकि हमने तो टाइम पे अपनी लिस्ट भेज दी थी उनको, और उसके बाद में मिनिस्टर ने हमको पूरा एक प्रपोजल भी भेजा था यहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस ये हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से आना चाहिए वो, तो अभी वो आया नहीं है, उसका इंतज़ार है, कोशिश कर रहे हैं आ जाएगा तो गवर्निंग बॉडी फॉर्म हो जाएंगी। उसमें मतलब लोगों को लेकर कोई इशू नहीं है, सिर्फ प्रोसीजरल है कि हमारे पास आया नहीं है अभी, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी तो गवर्निंग बॉडी का साइज़ कम हो गया है, उससे फंक्शनिंग चल रही है, लेकिन अगर पूरी गवर्निंग बॉडी रहे तो अच्छा रहता है। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल मैडम से है कि आपके पिछले साल टोटल कितने स्टूडेंट मतलब आए हैं और कितने पास आउट हुए? सेकंड कि आपने इतना कोर्स अभी नए कोर्स जो बनाए हैं तो काउंटर आपके काउंटर और बढ़ाएंगे कि बच्चों को जिससे सुविधा हो सके, क्योंकि काउंटर बहुत कम है, या कोई यही ज़्यादा सेंटर और बनाने की? जी 1,23,000 हमारे पास एडमिशन्स लास्ट ईयर हुए थे, और अभी थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की मदद से हमने डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स और बनाए थे और उससे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। लेकिन अभी ताहिरपुर में जुलाई में हमारी एक बिल्डिंग बन रही है 7 फ्लोर्स की, उसमें से 2 फ्लोर्स मिल जाएंगे। और रिसेंटली जो हमारा वेस्ट कैंपस है वो फुल्ली एक्टिव है, वहाँ पे काफ़ी लोड वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये 2 सेंटर्स हमारे जब वेस्ट और ईस्ट वाले फुल्ली एक्टिव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली काफ़ी काउंटर्स उसमें इंक्रीज हो जाएंगे। बच्चों को मालूम है कि आपका सेकंड काउंटर भी है? हाँ, स्टूडेंट्स का जो बीए पास कोर्स और बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनका सारा डिस्ट्रीब्यूशन और सारा वर्क वहीं से हैंडल होता है। जी नेक्स्ट सर उदय जी। क्लास साइज जो 60-30 था सर, उसको क्या रिड्यूस कर रहे हैं अभी या इस सेशन से लागू करेंगे उसको? देखिए ऑप्टिमम जो क्लास साइज है हमने कहा कि 60 होना चाहिए, और उसके बाद 60 पे तो शायद इशू नहीं था। इशू है कि ट्यूटोरियल एंड प्रैक्टिकल्स के क्या साइज होने चाहिए। हमने 30 या शायद 30-25 कुछ था, उसके बाद में कुछ लोगों ने इशू रेज किया, तो एक कमेटी उस पर काम कर रही है। अगर कुछ थोड़ा बहुत उनको लगेगा रीजनेबल तो उसको देखेंगे, पर अभी तो जो हमने नोटिफिकेशन किया है वही लागू है। जी माइक उनको दी। सर जैसे मैंने विज़िट किया था वेबसाइट हिंदू का भी और किरोड़ीमल का और हंसराज का भी, तो उसमें मतलब साइट पे कुछ अपॉइंटमेंट्स के वो नोटिस डले हुए थे कि अपॉइंटमेंट्स होने वाली है। अगर किरोड़ीमल की बात करूं तो उसमें तो पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ऑनर्स और उर्दू डिपार्टमेंट के भी टीचर्स के अपॉइंटमेंट होने वाले हैं। तो काफ़ी दिन से जैसे फर्स्ट सेमेस्टर तो ख़त्म हो गया और इस सेकंड सेमेस्टर के जुलाई में एग्जाम है, तो अपॉइंटमेंट जल्दी से अगर हो तो मतलब बच्चों के लिए आसानी होगी। टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं? जी टीचर्स। देखिए हम तो रोज़ ही अपॉइंटमेंट ही कर रहे हैं सर, तो टाइम कितना लग रहा है? नहीं, जैसे सेकंड सेमेस्टर अब खत्म होने वाला है। देखिए 10 साल का बैकलॉग है ये, 15 साल का कहाँ। हम महीने में 20 दिन अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अभी भी मैं इंटरव्यू बोर्ड से उठ के आया हूँ यहाँ पे। यूनिवर्सिटी के हम कर रहे हैं, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और उनके चेयरमैन कर रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये है ज़्यादा से ज़्यादा आप समय इसी में दीजिए। ये टॉप प्रायोरिटी पे है हमारा कि एडहॉक सिस्टम से हम बाहर आएँ यूनिवर्सिटी के और रेगुलर टीचर्स हों और वो पढ़ाएँ। और मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि करीब हम 2000 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स कर चुके हैं पिछले करीब 10 महीने से। इंटरव्यू चल रहे हैं लगातार, और अभी हमें करीब 1500 और करनी है। तो आप मान के चलिए कि 4-6 महीने तो हमें लगेंगे ही, अगर हम 20 दिन रोज़ भी करेंगे तो भी। लेकिन हम चल रहे हैं, लगे हुए हैं इसमें अभी।
और वहाँ भी हर कॉलेज के प्रिंसिपल से से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप पूरा टाइम इस पे ही लगाइए आजकल, और बाकी काम बाद में हो जाएंगे, क्योंकि बहुत साल आपने बाकी काम किए, ये काम नहीं किया, इसलिए इतना बैकलॉग हो गया। अब आप ये काम पहले कीजिए, बाकी बाद में हो जाएंगे। जी नेक्स्ट। अच्छा विश यू अगेन। Sir, is there any update on DUSU election? टाइम पे इलेक्शन करेंगे, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल इलेक्शन करेंगे, कोई इशू नहीं। जी कोई और? आहा कितनी अच्छी बात है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, आप संतुष्ट हैं। हमें इससे बढ़िया आनंद और क्या हो सकता है मित्रवर। अभी बाइट्स के लिए आपको यू आर फ्री टू हैव योर बाइट विद सर, और इधर ही बेटर रहेगा कि आप बाइट यहाँ करें, है ना, या जैसे आपको सुविधा लगे आप देख लीजिएगा। और इसके बाद इट इज़ लंच तैयार है, लग रहा है गर्मा गर्म है, तो हम सब इकट्ठे अब इसके बाद लंच कर लें। इन द मीन टाइम यहाँ बाइट जो है ये भी लेते रहेंगे वीडियो के लिए, और उधर हम लंच शुरू करा रहे हैं, तो आप लंच भी ज्वाइन कर सकते हैं साथ के साथ। जी जी ये पीछे का पार्टीशन को खुलवा दीजिएगा, ये पार्टीशन खुलवा दीजिएगा।